How Devesh. was the session? What's sir? Sorry. How was the session? Session is very good. Okay, good. Yes, they are explaining us each and every step Mm-hmm. for HR interview rounds and group discussion also. How Mm-hmm. to confidence and how to answer the questions. Okay, okay. And personality development also. Mm-hmm. I mean, eye Okay. contact and our expressions. Mm-hmm. Yes. Nice, nice. Okay. आणि देअर तर ते आम्हाला हे पण करणार आहे म्हणजे व्हर्च्युअल इंटरव्ह्यू आहेत सर आमच्या कंपनीचे. Mm-hmm. त्यांनी सांगितलं आज मी सरांना विचारलं होतं. Okay, nice, nice. कधी planned आहेत काय? नाही ते नाही सांगितलं अजून. त्याआधी एक आपली टेस्ट असते ना एनएमडीची त्यामध्ये स्कोर Mm-hmm. करावा लागेल. Okay, okay, okay. Right, right. Okay, that's good. Nice to hear. Okay, good then. So, should we start? Chalo. So, we'll start with the section. So we are learning visualization related libraries such as Matplotlib and Seaborn. हे दोन libraries आपण शिकतोय. So we are learning libraries related to visualization, right? And in this we have almost covered how to plot or how to draw a line chart and how to draw a bar chart. For line chart we used df.plot function called plot, and for bar chart we used a df.bar. This is in case of a matplotlib library. Same if you want to apply in Seaborn library, you write df dot bar chart or bar plot, something like this, right? Okay, this is what we see. Then if you want to create a label, so you start with X label, Y label, then legend, right? Title, legend. Okay, let me run everything once again. Okay. Right, so if you want to add labels, if you want to add title, so you write df.title, df.label, df.x label, df.y label. So and if you want to add colors, so there is a parameter called hue, hue, right, which you can add so that आपको जो ग्राफ रहेंगे उसमें आप कलर ऐड कर सकते हो, अलग अलग कलर्स. एंड इफ यू वांट टू शो लीजेंड, मतलब हर एक कलर का मीनिंग आपको रिप्रेजेंट करना है, सो यू कैन पास plt डॉट लीजेंड, राइट. होप सो. Sorry, np is okay. Run selected and all below. Okay, sure. So bar chart np range, where we wanted to cover a scatter plot, right? Scatter plot. Sure. So what is a scatter plot? Scatter plot is nothing but a graph or a chart which indicates a relation between two variables. मतलब दो कॉलम के बीच जो भी रिलेशन रहेगा उसे रिप्रेजेंट करना है तो we use scatter plot. Okay? Relation, what do you mean by relation or how to find out relation? For example, आपको फाइंड आउट करना है डिस्टेंस वर्सेस टाइम, राइट? डिस्टेंस और टाइम के बीच का रिलेशन आपको प्लॉट करना है. सो व्हाट वी डू जनरली, इफ यू कवर मोर डिस्टेंस ज्यादा टाइम लगेगा, लेसर डिस्टेंस लेसर टाइम, राइट? ये हो गया रिलेशन बिटवीन द टू. और फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड हाउ स्टूडेंट्स, ओके, क्लास में स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस कैसा है, मतलब यू वांट टू सी जो बच्चे मैथ्स में अच्छा स्कोर, जो बच्चों ने मैथ्स में अच्छा स्कोर किया है उन बच्चों का साइंस में कैसा परफॉर्मेंस है, राइट? सो व्हाट इज अ रिलेशन बिटवीन
science marks and marks in mathematics. तो इन दोनों के बीच रिलेशन आपको फाइंड आउट करना है. In such cases we use a scatter plot. Okay, तो these two variables can be anything जिसके बीच में आपको स्टडी करना है, like you want to understand or you want to study the relation or the effect, that time you use a scatter plot. Okay, so we'll start with the data set. There are, as I mentioned earlier, Seaborn जो library है ये not only चार्ट और विजुअलाइजेशन है इसमें, बट ऑल्सो दिस कंसिस्ट ऑफ सम इनबिल्ट डेटा सेट. मतलब इसमें डेटा सेट अवेलेबल है. तो ये कैसे फाइंड आउट करना है? यू कैन यूज अ फंक्शन कॉल्ड गेट डेटा सेट नेम्स. ये फंक्शन आप यूज करोगे तो इट विल गिव यू अ लिस्ट ऑफ डेटा सेट्स. कौन कौन से डेटा सेट्स है यहाँ पे देख सकते हो आप. अवेलेबल डेटा सेट अटेंशन, ग्लू, आइरिस डेटा सेट ये बहुत कॉमन है. और ओके, नहीं तो टिप्स डेटा सेट ये भी बहुत कॉमन है. और मोस्ट कॉमन इज टाइटैनिक. राइट, टाइटैनिक रिलेटेड डेटा सेट. जब आप आगे मशीन लर्निंग वगैरह पढ़ोगे तो टाइटैनिक डेटा सेट बहुत बहुत कॉमनली यूज होता है. राइट, टाइटैनिक. तो ये ऑलरेडी इनबिल्ट सीबॉर्न लाइब्रेरी में दिया है. हमें जो चाहिए हम वो यूज कर सकते हैं, नॉट एन इशू. सो लेट्स स्टार्ट विद आइरिस डेटा सेट. आइरिस नाम का एक डेटा सेट है. वो डेटा सेट मैं लोड कर रहा हूँ. एस डॉट लोड डेटा सेट. लोड किस में कर रहा हूँ? फ्लावर्स अंडरस्कोर df करके जो ये डेटा फ्रेम है इसमें हमने ये स्टोर किया है. लेट्स सी कि क्या डिटेल्स है इसमें. देखिए, फ्लावर्स, सेपल लेंथ, सेपल विड्थ. राइट, जस्ट अ सेकंड, आई एम गेटिंग अ कॉल. हेलो. हाँ, बोल के काय काय. हाँ हाँ हाँ. हेलो. आराम नहीं दे. ओके, थैंक यू. ಇಲ್ಲಿ ಮನ್ಯಾಗ ಅದೀನಿ. ಹಾ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ನಡೆದಿತ್ತ. ಹಾ, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮನ್ಯಾಗ ಇವತ್ತು. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾಡಿ. ಕಟ್ಟಡ. ಅದೇ. ಅದೇ 20. ಅದು 17 ಲಾಸ್ಟ್. ಅದೇ ಬರ್ಬೇಕು. ಅದೇ ಊಟ ಅದು ಆಯ್ತು. बर्थडे वांगी भात, पनीर, चिली पनीर. हाँ, असली ಹಿಂದಿನ ಮತ್ತ ಕ್ಲಾಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಡೆದೈತಿ ನಾ ಹಿಂದಿನ. Sorry. Okay, I lost. Okay, audible.
हेलो हेलो। यस सर। ओके यस सर। ओके ओके सॉरी। सो फ्लावर्स डेटा सेट हमने यहाँ पे लोड